Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics. Starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students impact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हमने क्या चीज़ एनालिसिस में एनालाइज करनी है. फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है. सो दिस इज़ वेयर वी कैन हैव अ लुक एट इट. असम्पशंस हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है कि व्हाट आर दोस पॉइंट्स. सो देयर आर 4-5 पॉइंट्स व्हिच आई हैव एलैबोरेटेड हियर. हम इसको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं असम्पशंस के बारे में. ऑल कॉस्ट आर either perfectly variable or absolutely fixed. Volume of production and volume of sales are equal. Sale price of product is constant. Constant rate of increase is variable cost. No improvement in technology and labor efficiency. And one more thing, that changes in input prices are ruled out. A break-even point क्या है कि helps in determining the optimum level of output, the target capacity of the firm to get the benefits of minimum per unit production cost, minimum cost for a given level of output, selling price for a product, and establishing the point from where the firm can start paying dividend to shareholders. On the significance of break-even point, we have to look at the impact of new product launch, impact of purchasing new capital equipment, or make, buy, or lease capital equipment. So revenue and cost implications of changing the process of production, impact of changes in price or cost on profit of firm. Different methods of representing break-even points. break-even points को मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि स्लाइड में हम देखेंगे. फर्दर अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो इसको अलजेब्रिक तरीके से देखा जा सकता है. ग्राफिक के अंदर फिर आगे एनालिटिकल पैटर्न है और स्टैटिस्टिकल पैटर्न है टू कैलकुलेट दी break-even points. Graphical representation of break-even point. So we can see here the break-even point. The red color showing is loss and the green color showing is the total profit. So ये वो point है 3 के ऊपर कि जहाँ से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि break-even point से ऊपर हमारे पास सेल्स होंगी, उसके अंदर हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो प्रॉफिट के कैश में जाएगा और उससे अगर नीचे होगा तो वो लॉस में जाएगा. So this is how it is presented, and one can have a better understanding on firms total revenue and total cost analysis. This we come to an end to this lecture, and in the next lecture we will be discussing the other approaches like algebraic approach, analytical approach, statistical approach, so we have a better understanding on how to calculate the break-even analysis, and then we will be discussing the role of managers as well. Assalam Alaikum.